the bow that bridges heaven and overtops the trees, and builds a road from earth to sky, is prettier far than these. Thank you. Is without fear. Where is the mind is without fear, and head is high, where knowledge is free, where the world has not been broken up fragments by narrow domestic walls, where the words came out from the deep of truth, where talent striving, stretching his arm towards perfection, where the clear stream of reason has lost his way into a dreamy sand of dead habit. Where is the mind is led forward by thee into ever-winding thought and action, into that heaven of freedom. My follow, let my country hope. Thank you. About World Poetry Day, a famous poet, Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was famous for the way he wrote about field life in the early 20th century of his poetry. I want to recite a poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. The way a crow shot down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have good. Thank you. Today is World Poetry Day. I want to tell a small paragraph about William Wordsworth. William Wordsworth loved nature and wrote many poems describing the beauty of nature, which are well known and well loved to this day. I am telling a famous poem written by William Wordsworth, After the Storm. There was a hurricane in the wind all night. The rain came heavily and fell in the flood. But now the sun is rising, calm and bright. The birds are singing in the distance over his own sweet voice. The jackals answer as the mighty chants, and all the air is filled with flashing noise of water. Thank you. Life is given to us, we earn by doing it. Let the dead have the immortality for the friend, but the living have the immortality for the love. Life for error, cry for the merciful beauty, but that can coordinate into the actual nature of the harmony of the whole. Life, like a child, loves, seek the rattle of its dead as the runs at peace. Thank you, Madonna. He is best known as a leader of her Renaissance. He describes in the poem that life is harsh and difficult. We have to hold the dreams fast, or either the dreams will run away. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for if dreams go, life is a barren field, frozen with snow. Thank you. सौभद्रा कुमारी चौहान है। देव तुम्हारी कई उत्सव कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की ले आते हैं। धूमधाम से सजा बजा के मंदिर में वे आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें सजाते हैं। चरणों में अपत्रित ये मन है, चाहो तो स्वीकार करो। चरणों में अपत्रित यह मन है, चाहो तो स्वीकार करो। यह वस्तुएं तो तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। धन्यवाद। Student of the class 7B, representing here on the occasion of National World Poetry Day. Alfred Lord Tennyson was one of the most popular and well-known mid-19th century poets of England. His poems cover a wide range of themes and are known for their rich descriptive imagery and lyrical quality. One of the best poems by him is Break, Break, Break. Break, break, break on the cold grey stones, O sea, and I would dare my tongue to utter the thoughts that arise in me. Oh well, for the fisherman's boy that is out with his sister at play. Oh well, for the sailor lad that sings in his boat at the bay. Break, break, break at the foot of the crags, O sea, but the tender grace of a day.
all time. His poems, his collection includes of some 64 playwrights, 152 sonnets, and 3 long narrative poems. I am going to recite one of his best poems, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more complete. Rough wind to shake the darling buds of May, and summer leaves had all to short away. And its golden complexion gleamed. By chance on nature, by chance on nature changing course untrimmed. So long as men can see, so long as men can breathe or eyes can see, so long as these can give life to this. Thank you. From Interhouse. Today, on the occasion of World Poetry Day, I am going to recite the poem of Maya Angelou's Nine Lives. But first, I want to tell you something about Maya Angelou. Maya Angelou was an American memoirist, poet, and civil rights activist. She published 7 autobiographies, 3 book of essays, and 7 books of poetry, and is credited with a list of plays, movies, and television shows spanning over 50 years. She received degrees of award and more than 50 honorary degrees. The first, I Know, by the Kate Birdsey, tells of her life up to the age of 17 and brought her international recognition and acclaim. Her poem, Still I Rise. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may toad me in the very dirt, but still I thus I rise. You may cut me with your words, you may shoot me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still I care, I rise. Just like moons and like suns, I am with the certainty of sights. Just like hope springing high, still I rise. Bringing the gift that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Thank you. Down on the lane, all alone, without a word, taking for his own again, every little fluttering bird, not a footfall, not a sign, not a ripple of the air, not a sound to reckon by, yet I know that he is there. Thank you. By William Wordsworth. The bog is growing, the stream is flowing, the small birds sweeter, the lake down greener, the green field sleeps in the sun. The youngest and oldest are there with work strongest. There are 40 feeding like one. The sheep are grazing, their head never raising, like an army defeated. There are 40 feeding like one, like an army defeated. There is joy in the mountain, there is life in the fountain. Thank you. Famous poem written by Robert Frost, stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village door. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweet of easy wind and downy wind. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you. Imagine the fog, if I could fly under the sun. Determine the spreads of its wing, one day become a firefly and flutter away. The land it wondered day after day, how nice if I could simply fly away. And so on the wing of the mist one day become a cloud and floated away. Alas, the corn thought, how still I lie, while all the bird can happily fly. And so on the wings of the mist one day become a cloud and floated away. If I were a horse, I had galloped
free. If I were a fish, I had swim in the sea. If I were a bird, I had fly in the air so and in slow blue. Will none of my dreams come true? Thank you and have a nice day. नहाने जा रहा हूँ जिसका नाम सपना मेरा खालसा है। सपना मेरा खालसा कर्म चुकी जा त्याग से न डर आलस परित्याग किए जा गलती कर ना घबरा निकल फिर हो जा खड़ा समस्याओं को रास्तों से निकाल ले शैतान गिर तो ठोकर से उछाल ले रख हिम्मत तूफानों से टकराने की जरूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह समझ कर करते रहे पर मगर साथ सजा की बाबत भी कर फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद। को एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है शिक्षा। जीवन में जो राह दिखाए सही तरह चलना सिखाए माता पिता से पहले आता जीवन में सदा आदर पाता मेरे मन को भाता वो मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है छाव कभी है धूप वो मेरा शिक्षक कहलाता। धन्यवाद। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी है सतरंगी कहती बातें नई पुरानी जैसे बोले दादी नानी परी लोग की सैर कराती कभी कभी वो हमें डराती हरे भरे किताब सारे कहती बातें नई पुराने दुनिया की हर बात बताती। थैंक यू। लगे कवि आनंद परम जी हैं। कोशिश कर कल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन जैसा लक्ष्य जब निशाना लगा मुश्किल से भी जल निकलेगा मेहनत कर पौधों को पानी दे बंजर में भी फल निकलेगा सीने में उम्मीदों को जिंदा रख समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा कोशिश कर कल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद। सौभद्रा कुमारी चौहान है। देव तुम्हारे कई उत्साह कई ढंग से आते हैं सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की ले आते हैं धूमधाम से सजा बजा के मंदिर में ले आते हैं मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें सजाते हैं चरणों में अपत्रित ये मन है चाहो तो स्वीकार करो चरणों में अपत्रित यह मन है चाहो तो स्वीकार करो यह वस्तुएं तो तुम्हारी ही है ठुकरा दो या प्यार करो। धन्यवाद। कविता राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। इस कविता की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। इस कविता में भारत के गौरव गरिमा सौंदर्य और समृद्धि का गुणगान किया गया है। जय जय प्यारा जग से न्यारा शोभित सारा देश हमारा जगत मुकुट जगदीश दुलारा जय सौभाग्य सुदेश जय जय प्यारा भारत देश प्यारा देश जय विशेष अजय अवशेष सत्य विशेष जना न संभव उत्कालेश संभव केवल पुण्य प्रवेश। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। थैंक यू। विश्व कविता दिवस पर मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। मन जहाँ डग से परे है और सिर जहाँ ऊंचा है ज्ञान जहाँ मुक्त है और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया है जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं जहाँ थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में है जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुके हैं
ओ पिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत करो। धन्यवाद। इतना कुछ है भरा विभव का, कोष प्रकृति के भीतर, नित्य इज्जत सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, जब हो सकते कोष एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छुपा दिए सारे तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। धन्यवाद। इस कविता का नाम है कमल और तलवार। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कमल या तलवार? मन में ऊंची जोरवार या तल में अजय अपार। अंत कक्ष में बैठे तुम क्या रचोगे, ऊंचे मीठे गान या पकड़ तलवार तुम करोगे अपने घर की रखवार। ज्ञान दीप का जला के क्या तुम सिर्फ फैलाओगे उजियारी, या पकड़ तलवार तुम करोगी अपने घर की भी रखवाली। कलम में देश की ताकत है, इसमें भाव समाये हैं, ये दिल को ही नहीं दिमागों को भी आग लगाने वाली। धन्यवाद। कितना सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुहाने सबको भाते, उन्हें देखकर सब ललचाते। टीचर हमको पाठ पढ़ाते, नई नई बातें सिखलाते, फूलों से गिनती करवाते, टॉफी देकर हमें खिलाते। कितना सुंदर है स्कूल। धन्यवाद। कक्षा 9 के विभाग बी में पढ़ता हूँ। आप सभी को विश्व कविता के दिवस पर मैं एक कविता परिवेशन करना चाहता हूँ। कविता का नाम पे कदर, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, घामें मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार मुझ पर उछल कर बैठ जाता। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद हो गई है जो मुझ पर चढ़ी थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली है। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, बिना ही जाने कि जो हारी चढ़ी है उसकी खुद झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। बिना ये जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वह मेरे आँख से तमतमा रहे हैं, या फिर वह गुस्से से मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे मैं अभी भी चूम लेना चाहता हूँ, उस धरती की जिनमें मेरी जड़ें थी। धन्यवाद। मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ एक कविता सुनाने के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ उन शिक्षकगणों का जिन्होंने मुझे ये कीमती मौका दिया इस विश्व कविता दिवस पर, जो कवियों के लिए एक विशेष दिन होता है। कविता प्रकृति ने हमें कई रंग दिए डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा लिखी गई है, जो एक प्यारी कविता है जो प्रकृति को प्रस्तुत करती है। पेड़ दिए उपवन दिए, पेड़ दिए उपवन दिए, नदी तालाब झरने दिए, नदी तालाब झरने दिए, सागर दिए समुद्र दिए, प्रकृति ने हमें कई रंग दिए। वन दिए कानन दिए, वन दिए कानन दिए, फल फूल जीवन दिए, स्वच्छवायु का उपहार दिया, स्वच्छवायु का उपहार दिया, मनुष्य को जीवन दान दिया। हिम ओढ़ा हिमगिरी दिया, हिम ओढ़ा हिमगिरी दिया, कल कल बहती नदियां दी, हर द्वीप दिए समतल दिए, मनुष्य को रहने के लिए घर दिए। अपनी शीतल छाया दी, मनुष्य को माया दी, हर सुख दिए आनंद दिए, प्रकृति ने हमें कई रंग दिए। आखिर मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ प्रकृति के ऊपर। शैले शैले ना माणिक्य, मैतिक ना गजे गजे, साधको नहीं सर्वत्र, चंदन ना बने बने। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हर पर्वत पर माणिक नहीं होता, हर हाथी पर मोती नहीं होता, सज्जन लोग हर जगह नहीं मिलते, चंदन का पेड़ हर जंगल में नहीं होता। धन्यवाद।